अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन और मज़े में हैं। पढ़ाइयाँ वगैरह करें सही तरीके से, फोकस ऑन योर स्टडीज, अच्छे से मार्क्स लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझें सो दैट आप लोग जो हैं आप आगे इंशाल्लाह अच्छे से एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर आप लोग अपियर हो सके, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा और खूब फ्रेश एयर में जो है अपने आप को एक्सपोज करें। बंद कमरों के अंदर ट्राई टू कीप योरसेल्फ इन ओपन एयर, वेंटिलेटेड रूम्स के अंदर रहें, साफ सुथरा रखें अपने आप को, और सो दैट गॉड शुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेसेस और एनी काइंड ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर करते हैं शुरू, पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा। और हमने आज ट्रेकियोफाइट्स, वी गोइंग टू स्टार्ट ट्रेकियोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। और ट्रेकियोफाइट्स जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आई गेव यू द इंट्रोडक्शन प्रीवियसली, एंड द इंट्रोडक्शन आई डोंट नो इफ इट वाज अपलोडेड प्रॉपर्ली और नॉट, however I will brush over the introduction again and I will try to complete the introduction for you people, and hopefully you will like the lecture and you will understand the lecture. This is a previous lecture that I uploaded. Let me go to the lecture that we have for today. The lecture that we have for today, we have completed the bryophytes, and we have all these things that I have uploaded all these things, and you will have all the lectures with you. You can go back to my lectures and listen to them again. This is the whole presentation from which I am presenting this chapter to you people. तो इसमें ये सारा कुछ है और आप लोग अच्छे से जो है इसको देख लेंगे और अच्छे से जो है आप लोगों को जो है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह का फजल है और इंशाल्लाह मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, तो आपको अल्लाह ताला ज़रूर सपोर्ट करेगा। अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है, हमारा रब इतना बड़ा है कि वो तो अता करने के लिए है। वो कहता है मुझसे मांगो और मैं अता करूँगा। तो आप मेहनत करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर और बहुत अच्छा जो है अल्लाह ताला अता करेगा। जिसके लिए जो बेहतर है उसको वो मिलेगा। ठीक है, division tracheophyta. Let us do the introduction again, and we have already discussed this division and the main features of tracheophytes, how they are successful plants and what are the features. I have already uploaded a lecture about this. You have the lectures with you. Classification of tracheophytes, I told you about the 4 subdivisions of tracheophytes. I discussed Silopsida, and I am going to discuss the other 3 subdivisions also. In Silopsida, let us just brush over. Most primitive vascular plants lived about 400 million years ago. Most extinct, example, Rhinia, Horneophyton, Xylophyton, Cooksonia. Only 2 living genera, Xylotum and Mesopteris. The plant is rootless and leafless, means vascular bundles have not reached there. Stem is distinguished into underground rhizome and upright aerial part. Both are dichotomously branched. Aerial branches are green, leafless with bare, small, veinless outgrowths. The sporangia develop either at the tips, as in Rhinia, or on the sides, as in Xylotum. This is a living example. Xylotum is also known as a living fossil. ठीक है, तो and then this is how the vascular bundle is present just in the stem. We do not have the vascular bundle in the leaves or in the roots, and the gametophyte is extinct and is not known for the extinct ones, and the gametophyte is thalloid. Thalloid means not differentiated into proper structures, colorless, underground, inhabited by mycorrhizal fungus, shows a symbiotic relationship. We have discussed evolution of leaf in detail. बहुत अच्छा सा मैंने लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। अब आज हमने करना है लाइकोप्सिडा। अच्छा जी, तो लेट अस गो टू द लेक्चर। अच्छा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास लाइकोप्सिडा के अंदर जो है वो क्या है। ठीक है, ओके। लाइकोप्सिडा, द स्पोरोफाइट. The sporophyte is the 2n generation. The sporophyte is the 2n generation. It has the stem, the roots, and the true microphyllous leaves. True microphyllous leaves means कि इसके
अंदर vascular bundles are present. Position of the leaf क्या है कि vascular leaves जो है they are either spirally arranged all around or opposite like this. ऐसे देखिए अच्छा सा एक दूसरे के opposite के है, ठीक है. अच्छा जी. Sporangia develop singly on the upper side of the sporophylls. Yeah. ये है sporangia singly on the upper side of the sporophyll. In the previous chapter, I told you microphyllus, small leaves, sporophylls, spore-producing leaves. Sporangia develops singly on the upper side of the sporophyll, spore-producing leaves. ठीक है, उनकी ऊपर वाली side पे sporangia are going to be present, and these spore-producing leaves they might either be present singly or arranged in groups which are known as strobili. Now this is a strobulus. This strobulus is an aggregation of sporophylls. Ligule is a small outgrowth on the upper side near the base of the leaf and may be present as in Selaginella or absent as in Lycopodium strobili. These are supporting structures with the जो है वो strobili. They are absent in Lycopodium and they are present in Selaginella. These are examples, living examples of Lycopsida. Now this is the sporophyll arrangement and this is the ligule, and the sporophylls के ऊपर यहाँ पर आप देखिए one sporangia in each sporophyll, one sporangium, and this sporangium contains spores. Meiosis is going to take place inside these sporangia, and the haploid spores are going to be produced, and then the haploid spore is going to germinate into the haploid gametophyte. The sporangia may be homosporous of the same nature or heterosporous of different nature. Homosporous sporangia in Lycopodium, heterosporous sporangia in Selaginella. ठीक है, and when it is heterosporous, hetero different means कि Selaginella is going to show us the different size of male and the female spores. Microspores, micro, small, spores, megaspores, large size spores. Microspores will be the male spores and megaspores will be the female spores. Where are we seeing this? We are seeing this in Selaginella. We see many turning points in Selaginella. One of it is this. Lycopodium, homosporous. The plant is going to be monoecious. The gametophyte will be monoecious because all the spores are of the same nature. In Selaginella, the gametophyte is going to be dioecious. The male and the female gametophyte will be different. ठीक है, याद रखना है इस बात को. Lycopsida are generally called as club mosses, hanji, or spike mosses because of their club-shaped or spike-shaped strobili and small leaves resembling those of mosses. ये देखिए, ये club की shape का है. ये जैसे आपका baseball होता है ना, baseball bat होता है, आगे से थोड़ा सा swollen होता है. ये देखिए, ये strobili है, club-shaped है. ठीक है, and mosses क्यों है? जैसे कि हमने ब्रायोप्सिडा में देखा है, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो आपके पास लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, तो दे आर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अपना क्लब मॉसेस. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई आर लाइकोप्सिडा नोन एज क्लब मॉसेस? सो दे आर नोन एज क्लब मॉसेस बिकॉज ऑफ द क्लब शेप्ड स्ट्रोबिलाई. ठीक है, club shaped or spike shaped strobili and small leaves resembling those that are present in mosses. Mosses क्या चीज है? Mosses जो हैं वो हैं जी हमारे क्या हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स हैं. फिनेरिया का एग्जांपल हमने अच्छे से पढ़ा है. नेक्स्ट हमारे पास है स्फेनोप्सिडा. ये लाइकोप्सिडा गलती से यहाँ पर रह गया है, इसको आप लोगों ने नहीं देखना, इसको आप कट कर दीजिए. ठीक है, इसको हम कट कर देंगे. स्फेनोप्सिडा, these are also known as arthrophytes. Arthropod है ना, arthropoda, jointed appendages, arthro, jointed, poda, appendages, arthropoda. यहाँ पर हमारे पास क्या है? Arthrophytes, arthro, jointed, phyta, plants. These are plants that have jointed bodies. ये देखें अच्छे से, कितने मजेदार से, ये देखें ये इनकी बॉडी के ऊपर, लुक एट दिस, इनकी बॉडी के ऊपर ये देखें मजे के खूबसूरत से अल्लाह मियां ने जॉइंट्स बनाए हुए हैं. जोड़ ऐसे लगता है जैसे जोड़ है.
These are known as the nodes. और इसके दरमियान में the distance between this is known as the internodes. Phenopsida, also known as arthrophytes, as the plant body consists of joints. Now look at this. Hilons में बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं damp areas के अंदर. ये देखिए. The sporophyte differentiated into the stem, the roots and the leaves. क्या बात हो गई यहाँ पर? Vascular bundles present हैं stem में भी. Vascular bundles are present in the roots. Vascular bundles are present in the leaves. So क्या होगा? The sporophyte is very strongly developed and it has the vascular bundles present in all these parts. Leaves are small, microphylous है, scale-like है. Always arranged in whorls at the nodes. गोल गोल ये देखें leaves है, microphylous है और गोल गोल around the nodes they are present. ये देखें ये stem देखिए इसकी rough है. This is a rough stem, not smooth. ये furrows and ridges are present and this is the node from where the leaves are going to grow out. The main stem is not smooth but has furrows and ridges. ठीक है. Branches arise from the nodes. ठीक है. Now we come to the strobili. This is the strobili, the strobulus. And the strobulus is made up of special types of structures which are known as the sporangiophores, sporangia. Sporangia are born on special types of stalks called the sporangiophores, aggregated to form strobili or cone. Now, here आपके पास फर्टाइल लीव वाली कहानी खत्म हो गई. ये देखें दिस इज द स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ये देखिए स्पोरेंजियम है और इसके नीचे वाली साइड पर हमारे पास स्पोर्स आर गोइंग टू बी produced. These sporangiophore they hold the sporangia and many sporangia aggregated together form the strobili or the Sporangiophore is a slender stalk with an expanded disc at the free end. This is the expanded disc. Sporangia appear on the underside of the disc. क्यों? Protection के लिए ताकि वो खराब ना हो, ज़ाया ना हो. Gametophyte or prothallus has a circular outline and it grows on clay or muddy soil. The gametophyte is independent. It is a green gametophyte. It has rhizoids. It doesn't have vascular bundles. The fertilization is going to take place on top of the gametophyte, and initially the sporophyte is going to be dependent for the initial support on the gametophyte, but later on it becomes independent. Acquisitum is the example, और acquisitum के नाम पर भी इस ग्रुप का नाम जो है वो जाना जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो है टीरोप्सिडा है, divided into 3 classes. Felicini, commonly called ferns. ठीक है. They are shade loving plants, mostly growing in the moist soil but can also grow in dry habitats. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, गमले में भी लगते हैं, घर में भी लगते हैं. फिलिसाइनी का हम इंशाल्लाह डिटेल जल्दी पढ़ेंगे. मैं आपको एक अच्छा सा लेक्चर फिलिसाइनी के बारे में अपलोड करूंगी. वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत पौधे हैं और मुझे फिलिसाइनी के मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो इंशाल्लाह see you people next time. We will be doing the detail of Felicini and then we will study gymnospermy and angiospermy, the other 2 members of the इसके अंदर फिर हम अच्छे से जो है ना डिटेल्स जो है हम पढ़ेंगे. ट्रेकियोफाइटा की हमारे पास सब डिविजन आ जाएगी और ट्रेकियोफाइटा के अंदर आपके पास जो है वो फिलिसाइनी है और आपके पास जिम्नोस्पर्मी है और आपके पास एंजियोस्पर्मी. ओके, ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, प्यार मोहब्बत से रहिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिए. ठीक है. ओके, सी यू पीपल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.